Hello and welcome to India Today. This is Hesha Chima, and joining me on this episode of Showreel is none other than the legendary Rakesh Roshan ji. Thank you so much for your time, sir. My pleasure. First of all, extremely thrilled to know that Karan Arjun is re-releasing, and I have this opportunity to sit here and talk to you about every detail of the film that I would have possibly seen as a child, and now sitting here and talking to you about the film. So thank you so much for the re-release. But before that, what gave you the idea and who gave you this push? You know what? 30 years, it looks, I met Karan Arjun yesterday. Because Shah Rukh and Salman are still there, the superstars. And this was a very cult film which they both worked in. And Kajol is also still there. Yeah. So I thought that they are as popular as they were that time and maybe more popular today. Yeah. So it's a good opportunity to show Karan Arjun to the younger generation who have not seen it, and to tell them and to show them that how a difficult story, an unbelievable story, can be made believable to the audience by making a very good commercial packaging with good songs, with good comedy, with good emotions, but a different kind of a subject, which is not believable at all. Yeah. Even today, if I tell you that आप मरेंगे वापस आएंगे, nobody will believe. But the picture that picture made people believe. Yeah. So it was a very difficult task for me. But then I was very convinced right from the beginning, word go, when this idea struck me. And nobody used to believe. My writers, my actors, everybody, nobody believed in it. But they just went ahead with my conviction. You know, that's what I want to ask you. I think वो era ऐसा था 80s, 90s where musicals were working, there was drama, all of these films were more there, and then cut to romantics, musicals, etc. and there is a reincarnation story which is yours. But आपने उसको इतना beautifully package कर दिया था. There is action, there are songs, there are these actors who probably you understood first कि they have the potential to be a superstar, because Shah Rukh और Kajol at that point Dilwale Dulhaniya release नहीं हुई थी. It was after Karan Arjun. Even हम आपके कौन है also released just 2 months before just the before. Release of Karan Arjun. So these heroes were kind of, you know, bucketed in certain roles and जो कहते हैं ना typecast हो जाते हैं, या grey shades कर रहे थे, या romantic कर रहे थे, and then they're doing these brother combination of Karan Arjun. At that point, जब आप casting कर रहे थे, ऐसा भी था कि there was possibly Ajay Devgan also who was approached for the film, and then he didn't do the film. Is this true? And then you went to Shah Rukh and Salman for the film? No. The first the film was titled Kainat. Okay. And it was announced with Ajay Devgan and Shah Rukh. Okay. But they both came to me and they said that we want to do the opposite roles. I want to do Karan, he wants to do Arjun. I said, why? He said, we want to change our image. But I said, both have got equal roles and both have got action, both have got songs, both are romantic, both are action-oriented heroes. Then why? But then he shows his physique and all that. I said, no, we can't change our image like that. पिक्चर भी चलनी चाहिए ना. अगर आप लोगों को खुश करने के लिए इमेज चेंज कर दूँ, कल पिक्चर ना चले, तो आपको कभी ये चीज़ का फ़ायदा ही नहीं होगा. Only if the film does well at the box office and you accept it, then only things will work. Yeah. So they didn't understand and they left the film. So I went to Salman and then I went to Amir. And they both agreed to do the film. Oh wow. Yeah. But Amir का ये था कि मेरी एक पिक्चर फ्लोर पे है अभी, वो 6 महीने के बाद मैं शुरू कर पाऊँगा. And I had my dates locked with Ajay and Shah Rukh a month ahead. So Shah Rukh came back to me again. He said, no, I want to do it. Though I don't believe in the story, I leave completely myself to you. Whatever you say, I'll do. Because he worked with me in King Uncle. Yes. And I was the first person to give him a check of signing amount to join films. Wow. Though Hemaji's film released first, but I was the first person to. So he gave the respect and he said, no, I want to do. So I told Amir then, कि भाई मेरे dates सब intact हैं. So we'll work some other time. And he said, of course, Rakesh ji, but please go ahead. So that's how we
made the film with Shah Rukh and Salman. Lovely. You know, मुझे ये भी पूछना है आपसे, आपने बहुत ब्यूटीफुली अभी खुद ही कहा कि both the heroes had very equal parts to play. You know, आजकल क्या हो जाता है कि there is protagonist, antagonist, some are fighting for larger screen space, some are not. But this was a film where both Shah Rukh and Salman were given equal screen space also. And of course, then there was Kajol and Mamta. At that point, जब आप वो लिख रहे थे दोनों के लिए characters, maybe जैसे आपने कहा actors तो अलग थे. How are you dividing the screen space so as both your heroes shine? See, being an actor myself, I knew it's very difficult to cast two heroes in a film. Exactly. And they both were equal. It is not like I'm casting Amitabh Bachchan and some other person. So Amitabh's got a bigger role and he's got a secondary role. So I thought, when I'm writing the script, I was very, very cautious that I must give them equal, absolutely equal roles. If he is hitting 10 blows, he should also have hit 10 blows. If he has got 2 songs, he should also have 2 songs. If he does, so everything was equal in every manner. And then I made both of them sit together and I narrated the whole script to them. I said, whatever you all want to say, say now. On the sets, I will not change anything, which I don't otherwise also. So they both were very happy, and then on the sets there was never an argument, never a discussion कि यार उनको ऐसा लाइन मिल गया मुझे ऐसा लाइन नहीं मिला, कुछ नहीं. You actually made us believe that Shah Rukh and Salman are best friends and they're like brothers. I feel like at that era when we saw the film, we were like, yeah, ये तो सच में इतने tight है because they are the Karan and Arjun. But another very important casting of the film was Rakhi ji. And you have worked with her as a romantic lead in 1970s, Aankhon Aankhon mein. बहुत सी pictures थी. Yeah, and quite a few. And then you suddenly decide to direct her, an actress who you worked with as a romantic lead, to become a mother. You have to break this down for me. ये कैसे? I went to her and I told राखी जी मैं पिक्चर डायरेक्ट कर रहा हूँ और ऐसी कहानी है. तो जब मैंने कहानी सुनाई तो हिची और तुम चाहते हो कि मैं ये रोल करूँ ना. मैं बोला जी राखी जी. बोला मैं करूँगी क्योंकि वो हीरोज यंग थे उस वक्त शाहरुख एंड सलमान. तो एंड शी सेड शी इज़ अ मैच्योर्ड एक्ट्रेस, a matured person. तो she understood कि this role requires me. मेरे बगैर ये शायद बनना मुश्किल होगा. Sometimes I'm not comparing myself to Mother India, but Mother India में जैसे नरगिस जी का रोल था, it was the most pivotal role of the film. तो इसमें भी करण अर्जुन में भी it's the most pivotal role. अगर राखी कन्विंसिंगली ये ना कहती कि मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे, तो nobody would have believed. Her dialogue delivery, her conviction of saying those dialogues was so strong that people wanted Karan Arjun to come back. Yeah. And so much so that till today it is relevant. There are reels, there are memes, like she's all over. The dialogue, everything from that film is something that is still relatable right now. Do you feel somewhere down the line the relatability factor which was there in the films of that time is now somewhat leading that कि आज भी ये theatres में re-release हो रही हैं, कितनी सारी हो रही है? जी हाँ, ये बहुत मतलब ये तो something which we don't understand also. I mean, I don't understand, but it happened when I released Karan Arjun. We used to have 12 o'clock shows. Yeah. तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे फ़ोन किया कि भाई वो बहुत डिमांड है पिक्चर पर. मैंने डिमांड कैसे हो सकता है ऐसे, वो दोनों रोमांटिक हीरो है. अच्छा, एक उसके पहले एक और कहानी सुना दो. जब मैंने दोनों को लिया और मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेरे सब बंदे हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स थे ऑल ओवर इंडिया के, तो मैंने कहा कि मैं एक्शन पिक्चर बना रहा हूँ. तो मेरे 2 डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ गए पिक्चर को. बोले आपने रोमांटिक पिक्चर हीरोज़ को लिए हैं पिक्चर में और आप बोल रहे हैं एक्शन पिक्चर बना रहे. सलमान और शाहरुख तो रोमांटिक हीरो हैं, वो एक्शन कहाँ से लगे, तो छोड़ गए पिक्चर को. और जब पिक्चर रिलीज़ हुई डेट, तो मैंने कहा 12 बजे का शो लगाना. उसके पहले तो 12 कुछ कहा नहीं मैंने, बोला 12 बजे का शो लगता था. दैट वाज अ रेगुलर प्रैक्टिस. तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि बहुत डिमांड है हम पिक्चर पर, हम 9 बजे का शो लगाते हैं. तो मैंने बोला डिमांड कैसे हो गया, इतने रोमांटिक हीरो हैं. पता नहीं आपके ट्रेलर्स ने और आपकी म्यूज़िक ने बहुत काम किया है लोगों को पुल करने के लिए थिएटर में.
मैंने देखिए आपने पिक्चर खरीदी है, आपकी जिम्मेदारी है, आप लगा लीजिए। तो मैं उस वक्त लैंडलाइन होता था, तो मैं जो है 6:15 बजे घड़ी घड़ी मेरे फ़ोन की घंटी बजे। अरे कौन सुबह सुबह मुझे फ़ोन कर रहा है? तो मैंने फ़ोन उठा लिया। बोला हेलो, बोला मैं CPPR से आपका डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा हूँ, हमें पब्लिक डिमांड इतनी थी कि सुबह 6 बजे का शो लगा दिया एंड इट वॉज हाउसफुल। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं? बोला हाँ, इतने पब्लिक डिमांड आ गए थे सुबह पिक्चर देखने के लिए। फिर मुझे और भी राजस्थान से फ़ोन आ रहा है, फिर पंजाब से फ़ोन आ रहा है। फिर दैट डे दे हैड टू डू शो आफ्टर द 12 o'clock शो ऑल्सो, 2 बजे का शो किया। सो फॉर 1 वीक जो है रनिंग द पिक्चर 24 hours। सो दिस वॉज समथिंग अमेजिंग विच हम तो सिर्फ पिक्चर बनाते हैं, तो ये भगवान का करिश्मा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 साल के बाद भी अगर हम ये पिक्चर रिलीज़ कर रहे हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो देयर इज सम पावर समवेयर। Yeah, for sure. Yeah. क्योंकि जब वो आया है, when the trailer was, it's announced कि it's re-release हो रही है with Hrithik's voice over and everything, we all have gotten nostalgic goosebumps कि ये हो रहा है, and now we're going to re-witness this in a magical space. I also want you to, Rakesh ji, talk to me about Hrithik and the association with the film, क्योंकि हमें पता है he was a young AD in the film. How was he? What was his zest like to see his father direct these two people who eventually he's gone ahead and worked with Shah Rukh later as well, right? How was that for him and you? So he was assisting me in the film, and actually, you know what? Whenever I make one line story, when Hrithik was 12, 13 or 14, I used to tell him, you know, "Rugu, मैंने ऐसे ही कहानी आया है दिमाग में। पापा हाँ अच्छा है पापा ये, हाँ पापा वो ये ठीक नहीं पापा." So I was just, you know, at home over dinner table or just sitting around, we should talk. When Subhash Ghai saw my film King Uncle, he said, "गुरु तुमने पिक्चर अच्छी बनाई है, तुम में एक बड़ी पिक्चर बनाने के जर्म्स हैं। Why don't you make a big film?" ऐसे बिग फिल्म मीन्स वॉल, मैंने बड़े स्टार कास्ट के साथ बड़ी पिक्चर बनाऊँ। तो मैं दुविधा में पड़ गया कि मैं उसके बड़ी पिक्चर में तो दिलीप कुमार होते हैं और राजकुमार होते हैं और बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, इतनी बड़ी स्टार कास्ट होती है, मैं कौन सी क्या कहानी बनाऊँ? तो उस वक्त ऋतिक ने मुझे बताया, बाबा याद है यू हैड नरेटेड वन स्टोरी ऑन रीइंकार्नेशन, and that gave me an idea. Yeah, that can be made. So that is how we started work on that. Imagine Hrithik believed in it, Yeah. but your actors and everybody else to convince was a very difficult job at that point. Yeah, Salman also believed in it when I went to Salman. I mean, the only person who didn't believe was Shah Rukh. And then he makes Om And Shanti then he Om, made Om Shanti Om. which again turns out to be a blockbuster hit also. Yeah. It's crazy. But आगे बढ़ते हुए मुझे एक और चीज़ आपसे बात करनी है, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंड करना है अब तो when it comes to action, action suddenly has become the flavor of the season. पिछले 2 साल में तो हम ज़्यादा ही action films देख रहे हैं, and then there is VFX, there's technology, AI. When you made Karan Arjun and the action that we have seen, there is no amount of that technology back then. VFX was also not this insane. Please break down some of those scenes for me where you had to direct इतने grandeur scale में and to make it believe that all of this is happening. घोड़े ये वो that noise. How was that coming to life on a big screen like that? But we used to make films of that kind, of that type. But that was No difficult. no green screen, and though it was very risky Yeah. for the actors also, because some shots they had to give live, though we had duplicates. But there was a norm, so we were used to it. As an actor also, when I was to act, जब मैं भी एक्शन सीक्वेंस करता था, मैं खुद ही करता था। तो वो एक नॉर्म था कि वो भी खुद ही कर रहे हैं, कुछ शॉट्स बहुत डिफिकल्ट है जब करना है वो डुप्लीकेट कर ले, but mostly शाहरुख and Salman only did most of the things. Oh, that's amazing. Yeah. Also, talking to me about the cast, which has your female actors, Kajol and Mamta Kulkarni. Again, the songs are iconic, they are iconic. You can't forget outfits, even the fashion, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, वो सबको याद है उन्होंने क्या पहना है, कैसे है. How was Kajol onboarded on the film, and Kajol being Kajol, what was her reaction? I asked Shahrukh, because Shahrukh was working with her in Bazigar. So I wanted to cast new girls so that, you know, dates की problem ना हो, कि ये दोनों तो हैं ही पिक्चर में. So he said, Kajol is very good.
So I went to her house and I worked with her mother Tanuja. And she was also there. I narrated the story and she started laughing. Reincarnation. Very nice. So they'll come back. You think they'll come back? Well, the story demands so. They will. Okay, I'm doing the film. So he took it in a very jovial way. It's fun, these things don't happen, but let me do it for fun's sake. Yeah. And casting Mamta Kulkarni, how did that happen? Mamta Kulkarni, I saw some pictures somewhere, and then I approached her and I said that I want you to do this film, and she agreed. Are you still in touch with the cast? Yeah, I'm with Shah Rukh and Salman. I am, and Kajol also I am. Mamta, I don't know. I've not met her since long. And then Amrish Puri was there. Yes. And he also asked me, तो मुझे लगता है करुण अर्जुन आएंगे. मैंने बोला जितनी बुरी तरह से उसको मारेंगे ना वो ज़रूर आएंगे. But I want to understand, sir. आपका head space क्या है जब आजू बाजू के लोग आपको बार बार एक rhetorical question पूछ रहे हैं कि like are you sure this film is going to work and you are like 100% it's going to work. How did the assurity come? So there is something like conviction. See, whenever I have made films, whichever films I have made, खून भरी मांग, सबने बोला मत बनाओ, वो बीवी और हस्बैंड को कैसे मारेगी. Then I made Karan Arjun Reincarnation कैसे हो सकती है. Then I made कहो ना प्यार है, वो दो हीरो हैं, ना वो भाई निकले हैं, ना जुड़वे हैं, शक्ल मिलती है एक दूसरे से. Then कोई मिल गया, then Krish. So I make films with my conviction because that keeps me alive. अगर मैं वही कहानी बनाऊं तो मुझे लगता है कि ये तो मुझे आता है, ये मैं कर लूँगा. पर मैं जब डिफिकल्ट स्टोरी लेता हूँ और उसको मैं एक पैकेज बनाता हूँ एंटरटेनमेंट में, तो दैट गिव्स मी स्लीपलेस नाइट्स. एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई चूज डिफिकल्ट सब्जेक्ट. ये हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. तो जो नहीं हो सकता है उसको मैं बनाता हूँ और उसको बिलीवेबल बनाता हूँ. बहुत मुश्किल काम होता है. सो दैट गिव्स मी रेस्टलेस नाइट्स, स्लीपलेस नाइट्स. क्या करूँ मैं इसको, कैसे करूँ, कैसे लोगों को कन्विंस करूँ, कैसे वो कन्विंस होंगे कि नहीं होंगे. अच्छा गाने डालता हूँ तो देन आई मेक इट अ फुल एक राउंड टेबल पैकेज होता है जो झुबरी तलैया से लेके एले तक सब देखें पिक्चर को. एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मेक सच काइंड ऑफ अ फिल्म. बोलते हैं कि एक कमर्शियल पिक्चर बनाता है, ये ऐसा है. अरे आप एक बना के तो बताओ. कमर्शियल पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल है. और चलती भी वही है ना. चलती भी वही है. चलती भी है और हर बार आप एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर कमर्शियल पिक्चर बना रहे हैं, नए सब्जेक्ट को लेकर बना रहे हैं आप. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आपको बाहर जाना है? एक होता ना कि एक जॉनर में कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने एक पिक्चर बनाई तो उसी जॉनर में वो बनाते रहते हैं. मैंने वो जॉनर पकड़ा नहीं. मैंने हर बार नए जॉनर की मैं पिक्चर बनाई. अगर खुद गर्ज दो दोस्तों की पिक्चर थी तो मैं डायरेक्टली ऑपोजिट बनाई खून भरी मांग विद हीरोइन ओरिएंटेड. तो मेरे खुदगर्ज को अगर वो चल गई पिक्चर इतनी तो मेरे दो दोस्तों की पिक्चर नहीं बनाई. मेरे कहने का मतलब वो है. फिर खून भरी मांग चल गई तो फिर मैंने कृष्ण कन्हैया बनाई डबल रोल के साथ. फिर मैंने किंग अंकल बनाई जो कोई तालमेल ही नहीं किसी पिक्चर में. फिर मैंने करण अर्जुन बनाई, फिर कोयला बनाई. तो हर पिक्चर के अपने अपने रास्ते अलग अलग थे. कभी किसी पिक्चर को आई एडमायर अदर्स वर्क वेरी मच. कभी मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है मैं फ़ोन करता हूँ, बट आई डोंट कॉपी देम. मेरा कंपटीशन में ही हूँ. जब एक पिक्चर चलती है तो गिव्स मी अ स्लीपलेस नाइट. अब मैं क्या बनाऊँ, अब क्या बनाऊँ नया कि लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कुछ नया बनाऊँगा. सो आई बिकम माई ओन कॉम्पिटिशन.
And that's such a beautiful way to look at it also ना, क्योंकि आप अपने को ही टक्कर दे रहे हो, अपने से ही बेहतर करना है. बट राकेश जी, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. जब करण अर्जुन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, आपका एसोसिएशन है जय ओम प्रकाश जी से भी, उनको बताया था आपने, बिकॉज दैट मैन इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ. He's legendary, and then you had a script like Karan Arjun where people are questioning probably, and you believed in it. Did you ever happen to speak to him? Yes, of course. That very story I used to narrate to him, and he also had some reservations, but he said that Gullu, तुम बना लोगे, मुझे पता है. जिस conviction से तुम मुझे कहानी सुना रहे हो ना, ऐसा लगता है कि you believe in it so much that you will make it. Actually, when I'm talking to you right now also, I feel like you believed in it so much that it's coming back again in the theaters. Maybe. Yeah, for the generation who's not seen it to watch it, that there was so much conviction. Anything that you remember that man must have passed on to you as just a word of advice? Jay Om Prakash ji, haan ji. I learned a lot from him. Actually, I used to share his office only. Yes. In Santa Cruz. He had a big office over there, and I had one cabin, small cabin over there. So I made these films over there only. Yeah. And I learned a lot from him. How to do business, how to read agreements. Because मैं तो actor था, मुझे कुछ पता ही नहीं. Right. This side. So everything I learned from him, so many things. And he was a very well-read person. He used to make agreements himself. I used to see that so many producers and so many directors and so many lawyers used to take dictation from him to write. Wow. So very knowledgeable person. Yeah. Rakesh ji, also very important to ask you this. When you're making a film with an ensemble cast, जहाँ पे आपके पास 2 actors, 2 heroines, फिर रेखा जी, then there is Amrish Puri, so many people. As a director, उस वक्त पे, अब तो मतलब lot of things have eased out in many ways. What was your temperament on a set? Like, how were you directing? Action और cut के बीच में आप क्या aspire कर रहे थे इन सब से निकालना? See, आज की डेट में बनाना बहुत मुश्किल है. उस ज़माने में जब हम पिक्चर बनाते थे, we used to be like one family. आपका शॉट 2 घंटे के बाद आ रहा है, लेकिन आप बैठी हैं, हमारे साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, तो अच्छे एटमॉस्फेयर में पिक्चर बनती थी. हर आदमी के साथ एक मेकअप मैन होता था, एक हेयर ड्रेसर होता था. मैंने जब करण अर्जुन बनाई तो रहने की जगह नहीं थी. जिस गांव में हम शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे एक आश्रम था, उसको मैंने होटल बनाया. 10 बाई 15 का एक कमरा होगा, जिसमें शाहरुख भी रुका था, जिसमें सलमान भी रुका था, जिसमें राखी जी भी रुकी थी, जिसमें काजोल भी रुकी. जो भी स्टार कास्ट है, सब उसी होटल में ठहरे थे, उसी जगह पे, जिसमें मैंने एक टेम्प्रेरी AC लगा दिया था, बेड लगा दिया था और टॉयलेट्स बना दिए थे. तो उस टाइप के एटमॉस्फेयर में सबको अपनापन लग रहा था. खाना एक साथ खा रहे हैं, डिनर एक साथ कर रहे हैं, बातें शाम को एक साथ कर रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोई फोक डांसर्स को बुला लिए. तो एवरी इवनिंग यूज्ड टू बी आज क्या करना है शाम को. तो वी यूज्ड टू बी लाइक अ फैमिली. आज ऐसा नहीं है. आज सब अपने अपने वैनिटी वैन में बैठे होते हैं, ना किसी से मिलते हैं, ना कोई बातचीत होती है. जैसे मैं, जितेंद्र, ऋषि कपूर, प्रेम चोपड़ा, सुजीत कुमार, वी आर फ्रेंड्स ऑफ लास्ट 40-50 years. आज कहाँ है वो दोस्ती? कहाँ? मैं नहीं देखता हूँ किसी एक्टरों में. वो जो दोस्ती है वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है. इन एन एरा जब सोशल मीडिया नहीं था और फिर एक मूवी बनती है, and then it gets this amount of numbers, eyeballs, love, appreciation, and superstars emerge out. From that era to this era, when you're re-releasing Karan Arjun in an era where there is social media, I don't know, how are you thinking about all of this? Do these thoughts even cross your mind? See, today, luckily, I have a good team with me. I have no idea, I can't even put a Instagram post. अभी आप जब आई थी तो वो इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहा था मैं, तो वो हेल्प कर रही थी मेरे को. So even I don't know how to post on Instagram or Twitter. So I am away from all this. But then today's generation and today's releasing tactics are these. Yes. So I have to follow the younger generation. Right. So I take their help.
And then whatever they say, I do. Whose idea was it to get Hrithik to do the voiceover? That was Hrithik himself. When I showed him the first cut of the trailer, he said, "Papa, I want to do the voiceover." Wow. I said, "Very good, we'll do it." And he did it very, very beautifully. Because हमने तो एक ऐसी डमी आवाज़ रखी थी, तो he has enhanced that voice and made it look so real. So I'm saying that now Karan Arjun में 3 हीरो हैं, शाहरुख, सलमान and Hrithik. And Hrithik, that's true. Like in this 2.0 of Karan Arjun, This trailer में. yeah, has like these 3 superstars right now of the generation where they're getting to see this. But Rakesh ji, also I want to ask you this. As a director, you know, when you're making a film, when you have your script in front of you, आपने बोला कि you follow the protocol. जो लिखा है, आप वही direct कर रहे हो. वो ज़माना ऐसा नहीं था. Which whenever I've spoken to actors, they said कि कभी-कभी scripts last minute लिखी जाती थी, dialogues last minute लिखे गए थे, and you are the exact opposite. Yeah, I was exactly the opposite, and people used to love working with me for this reason. जो मैं उनसे डेट्स लेता था, अगर 70 डेज लिया, 80 डेज लिया, उसी डेज में मैं उसको पिक्चर ख़त्म करता था. अगर मैंने 3 घंटे की पिक्चर बनानी तो मेरी पिक्चर 3 घंटे की स्क्रिप्ट होती थी. मैं कोई भी सीन एडिट करके बाहर नहीं रखता था. सो आई वाज सो प्रिसाइज. तो मैं 2 साल 3 साल में पिक्चर बनाता था. तो मुझे वो 3 साल का वक्त मिल जाता था कि मतलब वॉट एवर मनी आई एम गेटिंग आई शुड पुट इट इन द फिल्म, नॉट वेस्ट इट. वेस्टेज बहुत होता है. ये सब मैं बाहर सुनता था एज एन एक्टर. ये मैं काम करता था तो मैं देखता था कितना पैसा इन लोग वेस्ट कर रहे हैं. तो दैट समवेयर आई सेड नो, आई शुड वर्क इन द ऑफिस, मेक द स्क्रिप्ट टोटली टाइट, ताकि बाद में भी कोई एडिट ना कर सके. हम बार बार उसको दोहराएं बाय हार्ट. आजकल मैं देखता हूँ कि कोई अभी भी कोई आते हैं मुझे स्टोरी सुनाने के लिए, लड़की की मेरे पास कहानी है, तो अपना लैपटॉप खोलते उसमें सुनाते बढ़ते हैं. मैंने कभी ऐसा नहीं किया. मैंने जब भी किसी एक्टर को कहानी सुनाई, मैंने अपनी ज़बान से पूरी कहानी सुनाई विद डायलॉग्स. सब मेरे को याद होता था. तो 3 घंटे की नरेशन है, 2.5 घंटे की नरेशन मैं खुद देता था. आपको कभी ऐसा लगा कि जब आप खुद एक एक्टर थे, डिड यू फील कि देयर वाज अ गैप इन द स्टोरी टेलिंग, इन डायरेक्शन, एंड प्रोबेबली फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड जो आपका पोटेंशियल था as an actor, and that's why you shifted to be a director and then you made these films? नहीं, I think I was destined to become a director. That's why. We got legendary films, so I would agree. Like, listen, koi mil gaya, to I've seen some 50 times. So maybe I was pushing myself to be there. मैं साइड रोल भी करता रहा, छोटे रोल भी करता रहा. मैं बोला मैं जाऊँ नहीं पर्दे से, पर उस दौरान में मैं सीख रहा था सब. I became an actor, Rakesh Roshan Bail, producer Rakesh Roshan, and then producer Rakesh Roshan Bail, a director Rakesh Roshan. For sure. Lastly, before I let you go, Rakesh ji, I have to ask you this to sum it up all. I'm sure this is curiosity of a young girl wanting to know. You also have 2 like grandsons over there who may or may not become actors. Who knows, right? But then, can we see a remake of Karan Arjun like in a different way ever? Or you don't want to touch your classic? No, I will not touch. I cannot touch. But somebody else can. Yeah. For sure. Somebody else with his vision, with a new vision, he can, because it's a subject which can be remade. Yes. But I can't do it because that feelings what I got put in that time. If I try to put it now, it will be all artificial. Right. True. And then when you spoke to Shah Rukh and Salman about the re-release and even Kajol, what was their reaction like? They loved it and they said it's a very good idea. I hope the picture works the way it worked that time. Because आज के ज़माने में with this generation I want to see that ये picture accept हो रही है कि नहीं हो रही है. Has the generation changed? If this film runs very well, that's good business in the sense to its own level. I'm not saying कि 100 करोड़ का business करे. Correct. थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भी हो जाए तो ऐसा लगेगा कि ऑडियंस हैव नॉट चेंज्ड. दे आर द सेम. इवन दिस जनरेशन इज द सेम. दे हैव दोज फीलिंग्स, दे हैव दैट इमोशंस. और अगर नहीं चली बिल्कुल तो दैट मीन्स द जनरेशन हैज चेंज्ड. It's a good litmus test to understand what it is.
But Rakesh ji, thank you so much for your time and for bringing back the magic of Karan Arjun on the screens. I hope in a larger space we get to talk more about each and every work that you have done as an actor and a director. But today we tribute to your brilliant work of Karan Arjun and we see all the awards here. So thank you so much. Congratulations, and we open it for everybody out there to watch it. My pleasure. Thank you. Thank you.